हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अनमैचेबल लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में करने वाले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बातें। चलिए करते हैं शुरू इस कहानी को। वी डू द मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन इज प्रेटी सिंपल। इफ देयर इज वन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 is equal to a1 plus ib1, and then there is another complex number z2 is equal to a2 plus ib2, then you just need to add real part with real part, imaginary part with imaginary part. So if you are going to add z1 plus z2, it will simply become a1 plus a2, a1 plus a2, and I b1 plus b2, I b1 plus b2. The same thing goes with the subtraction or difference. If there is z1 is equal to a1 plus ib1 and z2 is equal to a2 plus ib2, तो डिफरेंस अगर आपको करना है तो आप रियल पार्ट का रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से करोगे. सो आई एम गोइंग टू गेट z1 minus z2 is equal to a1 minus a2, a1 minus a2 plus I, and then b1 minus b2. a1 minus a2 plus I, b1 minus b2. जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना हो तो बेस्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उनके सिंपल फॉर्म में लिखना, ताकि आप रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड कर सकें, ताकि आप रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट कर सकें. Whenever you are doing the addition or multiplication of addition or subtraction of complex numbers, it will always become convenient if you write them in simple form like a plus ib or c plus id, and then real part will be added together, imaginary part will be added together, or real part will be subtracted together, imaginary part will be subtracted together. Simple enough. So keep this in mind that as far as addition and subtraction is concerned, addition and subtraction, my dear friends, is going to be convenient only when you express the complex numbers in the normal form, in the simple first basic form. Do write this, that addition and subtraction would be convenient when done with normal form like a plus ib of complex numbers. So कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो कृपया उन्हें पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने से बचें. हाँ, पोलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट आइलर्स फॉर्मूला वाला फॉर्म यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा उस चीज को. So this is easy. So here we go, and now if there is a simple problem of simply adding two complex numbers, it's not going to be rocket science. You can simply add the real part with real part, imaginary part with imaginary part. That's bachchon wala problem. But let me give you something where you will have to think a little bit. For example, suppose there is z1 one complex number, there is z1 one complex number, and then there is z2 another complex number. So we have z1 which is one complex number, we have z2 which is another complex number, and let's say z is a third complex number which is defined as z1 plus z2. Then you need to answer that इनमें से क्या सही होगा. z1 plus z2 का मॉड्यूलस, z1 plus z2 का मॉड्यूलस z1 के मॉड्यूलस और z2 के मॉड्यूलस के सम के इक्वल होगा, या फिर z1 और z2 के सम का मॉड्यूलस z1 के मॉड्यूलस और z2 के मॉड्यूलस के इंडिविजुअल सम से ग्रेटर होगा, या फिर z1 और z2 के सम का मॉड्यूलस
Z1 के मॉड्यूलस और Z2 के मॉड्यूलस के इंडिविजुअल मॉड्यूलाई के सम से कम होगा, या फिर इफ यू क्लिक डी देन यू आर दैट। अगर आप डी क्लिक करते हैं तो आप वो हैं। वो मतलब सर, वो मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति खुद से करें, वो में जो जिसको जो भरना हो वो में भर लें। सो वट एवर यू वॉन्ट टू fit into wo, fit into wo, don't worry. So you can fit it according to your own convenience. All right, so which one do you think is correct? Before I answer this to you, you think about it, and I ask a similar question to you for difference as well. Difference के लिए भी मैं पूछता हूं ऐसा ही क्वेश्चन आपको। Z1 is one complex number, Z1 is one complex number, and Z2 is another complex number. Z2 we have got another complex number, and then there is a complex number we are defining, Z1 minus Z2. Then you need to find out which one is correct. Z1 minus Z2 mod will be equal to Z1 modulus and Z2 modulus difference, or Z1 minus Z2 modulus will be greater than the difference of modulus of Z1 and Z2, or the modulus of difference of Z1 and Z2 will be less than the difference of modulus of Z1 and Z2, or if you click D then you are that। अगर आप D क्लिक करें तो आप वो हैं। तो दोस्तों क्या लगता है आपको 7th और 8th क्वेश्चन के आंसर क्या होने चाहिए? 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन क्या होने चाहिए इनके आंसर्स? वेल, इन क्वेश्चंस को आंसर करना आसान तभी हो पाएगा जब आप Z1 और Z2 को आर्गेंड प्लेन पर रिप्रेजेंट करें और आर्गेंड प्लेन पर देखें कि समेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। Answering these two questions will be easy, convenient only when you represent Z1 and Z2 on argand plane, and then on argand plane you see that what exactly is happening. On argand plane you see that what exactly is happening when you sum up two complex numbers or when you take the difference of two complex numbers. So let's go ahead and try understanding this, that what will be the answer of this one and what will be the answer of the second one. Well, first of all, I know that on argand plane I can represent a complex number with the real part represented along horizontal axis and with imaginary part represented along vertical axis, and this point is representing Z1. Z1 will have its own marked. This point is representing Z1. Z1 will have its own marked, which is under root a square a1 square plus b1 square, and Z1 will have its own argument, which is tan inverse b1 upon a1. मैंने ये पिछले सेशन में आपको बताया था कि आर्गेन प्लेन पर इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दोस्तों अब हम लोग Z2 को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। We are now going to represent Z2 also like this, that Z2 is having real part A2 and imaginary part equal to B2, and then this point Q that I have marked this way is representing the Z2 complex number, which is having modulus equal to the length of OQ. So Z1 complex number का modulus क्या है? Z1 complex number का modulus, जिसे हम R1 कह रहे हैं, वो दरअसल इस OP वेक्टर की लेंथ है। वो दरअसल इस OP वेक्टर की लेंथ है। Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या है? Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, जिसे हम R2 कह रहे हैं, वो दरअसल इस OQ वेक्टर की लेंथ है। Z1 complex number modulus is being represented by the length of this OP vector,
Z2 complex number modulus is being represented by the length of this OQ vector. Now, बहुत ध्यान से समझियो. Now, my dear friends, I'm going to do this addition thing geometrically. I know to obtain Z1 plus Z2, real part must be added into the real part and imaginary part must be added into the imaginary part. So real part, and imaginary part, they should be added correspondingly. So I'm going to measure A1, I'm going to measure A1, and then I'm going to measure A2 value. Then I'm going to measure the A2 value. And after that, I reach A1 plus A2, which represents the real part of a complex number, which would represent the summation of both the complex numbers. And similarly, I do same thing I do with B1 and B2. यही चीज हमें B1 और B2 के साथ भी करना है. So I do same thing with B1 and B2. ध्यान से समझियो, बहुत 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 ध्यान से समझियो. Be very attentive. So I'm going to get same thing with B1 and B2. Now this complex number OR is representing Z1 plus Z2. But then we notice something really very interesting. A1 plus B1. This is representing Z1. And A2 plus IB2, this is representing Z2. A1 plus IB1, this is representing Z1. And A2 plus IB2, this is representing Z2. ऐसा लगता है जैसे वेक्टर सम किया गया हो Z1 और Z2 का. और इसलिए I can very clearly see, my dear friends, I can very clearly see that Z1 and Z2 and Z1 plus Z2, their modulus values are represented on this triangle. Their modulus values are represented on this triangle because one side of a triangle can never be greater than the sum of other two sides. We conclude Z1 plus Z2 mod has to be less than the sum of the modulus of Z1 and Z2. क्या ही तो बात है. So guys, this is how we know that this is not equal simply to the summation of modulus of Z1 and Z2. Rather, the modulus of Z1 plus Z2 will be less than the summation of simple individual modulus of Z1 and individual modulus of Z2. All right, you can actually try verifying it on some numerical values, and then you will be able to see it yourself. Suppose Z1 is 1 plus, suppose Z1 is, take 1 where under root becomes full integer. So let's say Z1 is 3 plus 4i. Now what will be the modulus of Z1? Modulus of Z1 will be under root 3 square plus 4 square, which is 5. And suppose Z2 is equal to 5 plus 12i. And if Z2 is equal to 5 plus 12i, then modulus of Z2 will become 5 square plus 12 square. That will become 13. Now, if I define Z as Z1 plus Z2, that will become 8 plus 16i. And what will be the modulus of this Z1 plus Z2, which is 8 plus 16i? Its modulus is going to become 8 square plus 16 square. So 8 square plus 16 square under root 8 square plus 16 square is how much? Let's calculate that quickly. And that value is less than the sum of these two values. You are getting just little less than that value. So we can very easily verify that Z1 plus Z2 mod is less than simply the sum of mod of Z1 and Z2. Cool. What about this one? If Z1 is one complex number, Z2 is another complex number, and
z is defined as the difference z1 and z2, the difference of z1 and z2, then which one is going to be correct? इस बार क्या ख्याल है आपका? इस बार वंस अगेन हम ज्योमेट्रिकली जाएं, अगर जाएं तो देखो z1 को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं a1 प्लस ib1, a1 प्लस ib1, मतलब ये o से p वाला जो वेक्टर है ये z1 के मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करेगा. दिस विल रिप्रेजेंट द मॉड्यूलस ऑफ z1 एंड सिमिलरली a2 प्लस ib2, a2 plus ib2, this o to q vector will be representing the modulus of z2. Perfect. So z1 and z2, but I want to add z1 and minus z2. Actually z1 minus z2 can be interpreted as adding minus z2 into z1. डिफरेंस को आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो जैसे आप माइनस z2 को z1 में ऐड कर रहे हो. एंड इफ दैट इज द केस वी आर गोइंग टू गेट z1 and then minus z2. Minus z2 means it will be just opposite, because real part will become negative and imaginary part will become negative. So if you draw minus z2, it will go like this. Minus z2 will go real part just opposite, imaginary part just opposite. So minus z2 will go something like this. Now I see that z1 minus z2 I have to do just like previously you have seen. एडिशन तो ये भी फिर से एडिशन ही बन गया z1 और माइनस z2 वेक्टर का. सो z1 से ये जो माइनस z2 वेक्टर है इसको यहां से ड्रॉ करो, z1 एंड माइनस z2 वेक्टर का समेशन हो जाएगा ये. दिस इज गोइंग टू बिकम द समेशन ऑफ z1 वेक्टर एंड माइनस z2 वेक्टर. दैट मीन्स नाउ दिस ट्राइंगल कैन बी यूज्ड. एंड ट्राइंगल में आप बता दो मुझे फिर से वही कहानी, दैट ट्राइंगल की किसी एक साइड का मॉड्यूलस, किसी एक साइड की लेंथ बाकी दोनों लेंथ के सम से हमेशा कम होगी. फॉर अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ एनी वन साइड विल ऑलवेज बी लेस देन द sum of the length of other two sides. The sum of the length of other two sides. My dear friends, minus z2 modulus will become z2 modulus only. Minus z2 modulus and z2 modulus, they both are the similar things. So now I have z2, I can take this side, and if I take z2 modulus this side, I will have z1 minus z2 modulus greater than the modulus, the difference of their individual moduli. So z1 और z2 के डिफरेंस का मॉड्यूलस उनके इंडिविजुअल मॉड्यूलस के डिफरेंस से बड़ा होगा, लेकिन z1 और z2 के सम का मॉड्यूलस उनके इंडिविजुअल मॉड्यूलस के सम से ग्रेटर होगा. Keep this in mind that as a conclusion of this session, we can write z1 plus z2 modulus, z1 plus z2 का modulus will always be less than the sum of their individual moduli, and the modulus of difference of z1 and z2 will always be greater than their difference of individual moduli. Keep these two formulas ready in your formula book. आपकी फॉर्मूला बुक जो मैथमेटिक्स की है उसमें ये दोनों फॉर्मूलाज लिख लें. नेक्स्ट सेशन में हम लोग करने वाले हैं आइलर्स फॉर्मूला और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बातें. थैंक यू सो वेरी मच पीपल फॉर ज्वाइनिंग मी. मेक श्योर दैट आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अपनी महफिल में, अपनी कम्युनिटी में शेयर करें. थैंक यू.